Hi guys, good morning. It's a 3 hour flight. So I just hope I'm able to sleep, like get some sleep on the flight. Guys, I think we're lost. Guys, I think we're definitely lost. We're trying to find a way to our car rental, but we can't. We can't. Hi guys, so we're in Cairns. This is 1 hour piche than Melbourne and Sydney. So body clock has gone fucked all. We've been sleeping and sleeping, and now we are on our way to get the car and just roam around a bit. Because here public transport is very bad, and so we'll have to get a private car, rent a car, and that's what we're doing. And it's been a while. Kafi walking हो जाता है यहाँ पे. So yeah, that's about it. Let's see where we end up after this. Trays from home to hopefully appease you guys. So day 2 of Cairns or Cairns has begun, and we are on a road trip to Port Douglas. You can see how hot it is, and yeah, so we stopped at one point called the Rex Lookout, and now we are having food at Thala restaurant, which is on the way. It's very popular for its beautiful property, and basically it's a resort, but you can come to the restaurant, see the lookout. It has a beautiful view, take photos, eat food, and all of that. So yeah, we're just having food, and I'll keep you updated. This coconut is from their plantation. Like, this is a whole plantation. So this coconut is fresh from there. Let's see how it is. इस beautiful view को देखिए. फिर हमारे दो. सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और हम एक्सप्लोर करते करते वी वर लुकिंग फॉर अ प्लेस कॉल्ड द कोव, एंड नाउ वी कांट फाइंड इट एंड वी आर लॉस्ट. और हमें ना पेड़ों से आवाजें आ रही हैं. वेट, Also, there are these mini spiders. हाँ, देयर आर मिनी स्पाइडर्स एंड इट्स अ कंप्लीट इट्स अ प्लांटेशन तो नहीं कहूँगी मैं, जंगलों में इन्होंने रिजॉर्ट बनाया हुआ है. एंड या, इट्स स्कैरी. सी, इट्स ऑल जंगल जंगल जंगल. वी हैव टू फाइंड आवर वे बैक एंड इट्स स्कैरी. चलो यार, अब क्या ही है, बस इतने ही पोर्शन में आवाज आ रही है ना. चल भाग के चलते हैं. चल ठीक है. Okay guys, we made it safely back after a lot of running and a lot of water later. 2 bottle पानी later, we're back. Really scary. I hate wildlife. Let it be known to the whole world. मुझे नहीं पसंद ये wildlife. पेड़ पौधों तक सब सही है. There were so many reptiles on the way back. वो हमसे डर रहे थे, हम उनसे डर रहे थे, but whatever. Yeah, if you are coming here, beware of the spiders. They're very tiny and बहुत light brown है, so you might not notice them. So beware of the spiders, the lizards, and wear shoes. We made a huge mistake of wearing slippers because we thought it's hot and we have to go to the beach. But wear shoes, carry slippers. On the beach you can always switch. And I think I'm going to take my own advice and do that tomorrow onwards.
आप देख रहे हैं हम कैसे हो गए हैं. The reason is snorkeling. So we snorkeled a little bit. मैं तो एकदम डीप पानी में चली गई थी, but my friends were so फट्टू, इनसे shallow से आगे नहीं बढ़ा गया. And I saw so many fishes. So many होगी 4 5 6 7 से so many पहुंच चुके. I saw so many fishes. एक थोड़ी ऐसे ट्रांसपेरेंसी थी, एक थोड़ी ऐसे स्ट्राइप सी थी, और एक बड़ी गंदी दिख रही थी. But yeah, it was fun. And now we have geared up for the Great Ocean Road. Great Barrier. Great Barrier Reef. तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं ज़रा ओवरव्यू दे देती हूँ. सो वी बुक दिस क्रूज ऑनलाइन. आई थिंक हमें 3 बंदों को कुछ $700 पड़ा है. एंड वी केम हियर, सो द चेक इन स्टार्ट्स एट 7:30 एंड यू हैव टू बोर्ड बाय 8 एंड शिप टेक्स ऑफ बाय 8:30. उससे पहले ये थोड़ा चाय पानी कराते हैं आपका. अगर आपको बोलेंगे नहीं चाय ले लो, ले ली तो ले ली, नहीं तो ये हटा लेंगे शिप 8:30. उसके बाद वी रीच्ड द ग्रीन आइलैंड बाय 9:15. सो इट्स अ नेचुरल फॉरेस्ट सॉर्ट ऑफ एन आइलैंड. वो आइलैंड है और वो नेचुरल फॉरेस्ट भी है. एंड यू हैव द ऑप्शंस टू स्नॉर्कल, यू हैव द ऑप्शन टू जस्ट एक्सप्लोर, बट वो बहुत छोटा था, आप 10 मिनट में एक्सप्लोर कर लोगे. एंड यू जस्ट स्नॉर्कल एंड वी डन विद दैट, यू कैन सी. और अब हम जा रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ. सो इट्स 11:38 right now. So from 9:15 to 11:20 we were there, and yeah, now we're going to the Great Barrier Reef, and the crew is serving us cake. I don't want to flip the camera because logo ko lagega. I'm trying to capture them, which is not the case, but yeah. अभी हम कोई प्लेटून में आ गए, विच इज समथिंग लाइक अ स्टेबल प्लेटफॉर्म, एंड वी जस्ट शिफ्टिंग टू अनदर. इट्स कॉल्ड अ सेमी सबमरीन. सो वी गोइंग देयर. बड़ी हालत ख़राब हो गई यार रेस में, बिकॉज द शिप वॉज मूविंग लाइक दिस. What? Oh my god, look at the water. Just look at the water. I don't know if you can see it, but how blue. Oh, I can see fishes. So we are in a semi-submersible sort of a ship. Let's see, क्या पता हमें shark दिख जाए. The blue tint of the water, like हम पूरे blue हैं. Can you see the number of fishes? Oh my god, मैं 0.5 लेती हूँ. But this is so scary. It's like हम इनके घर में आ गए हैं. Welcome to the semi-submarine tour. My name is Lawrence. We're going to be running a bit of commentary for you guys today. And he lives together with the coral animal symbiotically. So they live in perfect harmony together. There with the folds in it that look like it's all folded together. It kind of looks like the folds in a human brain. That one's called our brain coral. वो डाइविंग के लिए जा रहा होगा. हाँ. We're done with everything. I already look so tanned. And now we're going home. Not home. Hi guys, good morning. So today is our last day in Cairns and आज हमारी कोई itinerary नहीं है सर. So we just thought of getting ready. फिलहाल we are going to the beach. I know nobody goes to the beach like this, but
whatever. उसके बाद हम निकलते हैं कहीं और. Good morning, people. So today is our last day in this villa, but honestly, I'm happy. Because यहाँ पे इतनी गर्मी है. I really want to go back to a cold place, and so that's that. But I will miss this pool and the beaches and the comfort of just wearing shorts and not layers of clothes. Everything has its its and bits, I guess. But ठीक है. So आज का plan of action basically is to finally go to the most popular beach over here where we are living, which is the Palm Cove beach. हम इतने पागल हैं, हम पूरी दुनिया घूम लिए हैं यहाँ पे, लेकिन हम Palm Cove beach ही नहीं गए हैं. And we took a villa here for that very reason कि ये सबसे popular beach है, तो ये तो घर के पास होना चाहिए. खैर, so that's that. And now we're ready for the beach. So I totally forgot to tell you guys that this place is 1 hour behind Melbourne and Sydney. So the body clock was a fucked up scene. अब यहाँ से वापस जाना मतलब फिर से वो 1 घंटे का ट्रांजिशन. देन आफ्टर 10-15 days we will go back to India. Then that 6-hour transition, it's playing with my mind big time. हाँ, आजा बैठ जा. मैंने तो ब्लैक पहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 2, 3 go. Hey guys, look. घर वाली फीलिंग आ रही है मेलबर्न जाने में. Last leg of the trip is finally Melbourne, जहाँ से हमने start करा था, but we only spent 1 day over there. 1 night. Yeah, 1 night. Cute looking.